In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, five class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science, Chapter 3. This topic is flowers and seeds. Dear students, first of all, we discuss about the learning outcomes of Chapter 3, Part 2. Describe the structure of a seed and demonstrate its germination. Compare and contrast the structure and function of a gram and maize seed. Illustrate the conditions necessary for seed germination. Structure of seed. The outer covering of seed is called seed coat. कि किसी भी सीड का जो आउटर कवरिंग है उसको हम सीड कोट कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट इन साइड सीड. सीड के अंदर मौजूद एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है. सीड कोट इसको प्रोटेक्ट करता है. देयर इज पोर ऑन सीड कोट. सीड कोट पर सुराख बना होता है. पोर मीन्स सुराख. इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. इसको माइक्रोपाइल कहते हैं. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कोटिलिडन्स विच स्टोर फूड. एम्ब्रियो जो है वो कोटिलिडन्स पर कंसिस्ट करता है जहाँ पर जो है वो फूड स्टोर होती है. द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द टू कोटिलिडन्स. एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो जो है वो टू कोटिलिडन्स के दरमियान होता है. द एंड एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंटिंग एंड और सीड इज कॉल्ड रेडिकल. इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसको हम रेडिकल कहते हैं. When seed germination, its radicle forms roots. इसका जो radical part है वो roots बनाता है. The other end of the axis is called plumule. जो other end of axis है उसको हम plumule कहते हैं. It gives rise to the shoot और ये shoot बनाता है. जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इस एक्टिविटी में हम देखते हैं. स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेन सीड. रिमूव द सीड कोड. सीड कोड को रिमूव करें. ओपन द सीड longitudinal. हाउ मैनी कोटिलिडन्स डिड यू सी. जब हम इसको ओपन करते हैं हम देखेंगे हाउ मैनी कोटिलिडन्स. ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीड ऑन योर नोटबुक. तो हमने इस स्ट्रक्चर को अपने ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद हमने इसके पार्ट्स के नेम राइट करने हैं. जैसे देखें, जैसे हमने इसको बीज को ओपन किया तो हम देखेंगे देयर आर टू कोटिलिडन एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल and this is the seed coat and this is the radicle. Radicle make the root part and this is the plumule and this is make the shoot. Dear student, the next topic is germination of seed. The germination of seed is the process in which a seedling comes out of the embryo of seed. Germination of seed वो process है जिसमें किसी भी seed के जो embryo है उसमें से seedling comes out होते हैं. During germination, seed absorbs water through its micropyle. Micropyle जैसे हम पढ़ा कि किसी भी बीज के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है और उस सुराख में इस पोर में जब पानी ऑब्जर्व होता है एज अ रिजल्ट सीड स्वेल्स और इसके नतीजे में सीड जो है वो स्वेल्स हो जाता है. स्वेल्स मीन्स फूल जाना. द सीड कोड बर्स्ट और क्या होता है जो सीड कोड होता है वो फट जाता है. बर्स्ट मीन फट जाना. द कोटिलिडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड प्लम्यूल. तो इसको जो कोटिलिडन है वो रेडिकल और प्लम्यूल को फूड प्रोवाइड करते हैं. The radicle grows towards the ground and gives rise of roots. जैसे पढ़ा कि रेडिकल है वो बीज का रूट सिस्टम बनाता है तो ये जमीन की तरफ जो है वो ग्रो करता है. Then the plum grows upward and give rise to a tiny shoot. और जो प्लम रोल है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो मूव करता है उसकी तरफ ग्रो करता है एंड गिव राइज टू अ टाइनी शूट और ये शूट सिस्टम बनाता है. द कोटिलिडन्स फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ सीड. तो इसमें जो कोटिलिडन है उस पर जो है वो आहिस्ता वो लीफलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं. दीज लीव प्रोवाइड फूड द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट टिल द न्यू लीव्स. तो ये जो हमारे पास जो रूट और शूट सिस्टम है इन दोनों को ये लीव जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं. Structure of maize seed. Take grains of maize, observe a maize seed and draw a sketch of its external structure. Study its external structure and compare the given table. ये हमारे पास देखें ये एक पिक्चर है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेज है. दिस इज द सीड कोड एंड दिस इज द एंडोस्पर्म एंड दिस इज कॉल्ड द embryo. Characteristics observation. Color yellow, shape oval or flat shape, structure of external surface, thin seed pod. Maize is a monopod plant. There is one cotyledon in its seed. तो वो
बीच में वन कोटिलेडन होता है, इसको मोनोकोट प्लांट कहते हैं। इसी तरह मेज हैव वन कोटिलेडन एंड दिस इज कॉल्ड मोनोकोट प्लांट। द मेज सीड इज ओवल एंड फ्लैट इन शेप। इसकी शेप जो ओवल और फ्लैट शेप होता है। इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ थीन सीड कोट। इसका जो सीड कोट है वो थीन होता है। थीन मीन्स बारीक या पतला। देयर इज एन एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड। इसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है। वे फूड इज स्टोर, जहाँ पर वो अपनी खुराक जो है वो स्टोर करता है। द एम्ब्रियो ऑफ मेज सीड कंसिस्ट ऑफ वन कोटिलेडन। इसका एम्ब्रियो जो है वो वन कोटिलेडन पर कंसिस्ट करता है। अ रेडिकल एंड अ प्लम्यूल। इसमें रेडिकल और प्लम्यूल भी होते हैं। Activity 3.6, to observe the internal structure of a maize seed. This is the external structure of the maize seed and this is the internal structure of the maize seed. Take the longitudinal section of a boiled maize seed. आपने boiled maize seed लेना है और उसके बाद इसके आप internal structure को देख सकते हैं. This is the seed coat, this is the cotyledon, and this is the endosperm, and this is plumule, and this is radicle. Plumule make the shoots and radical make the roots. The next topic is structure of gram seed. Student, this is the internal structure of a gram seed. This is seed coat and this is micropyle. Characteristics and observation. Color light brown, shape conical, pear shaped. Structure of external surface thick seed coat. There are two cotyledons in the gram seed. It is conical, pear shaped and light brown color. The external covering consists of a thick seed coat. It has micropyle but no endosperm. कि इस ग्राम सीड है, इसमें माइक्रोपाइल होता है मगर इसमें एंडोस्पर्म नहीं होते। इसमें टू कोटिलेडन्स होते हैं। There are two cotyledons beneath the seed coat. Seed coat के नीचे जो है टू cotyledons होते हैं। There is an axis between the two cotyledons. The lower end of the axis is radical. इसके टू axes हैं, जो lower end of axis है उसको हम radical कहते हैं, while the upper end is plumule और upper axis को plumule कहते हैं. This is the internal structure of the gram seed. This is two cotyledons. This is radicle and this is plumule. The lower end of axis is radical and the upper end of axis is plumule. Comparison of gram and maize seeds. Gram seed, it has two cotyledons. Endosperm is absent. Embryo is present at the center of the seed. Maize seed, it has one cotyledon. Endosperm is present. Embryo is present at one side of the seed. The next topic is conditions necessary for seed germination. कि किसी भी सीड की जर्मिनेशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. All seeds need water, air means oxygen and proper temperature to germinate. किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, उसके जर्मिनेशन के लिए वाटर, एयर यानी ऑक्सीजन और प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. Dear student, all the concepts of chapter 3 are completed. Now we discuss the question answers of chapter 3. Question number 2, write short answer. Can you tell the names and functions of four parts of flower? Sepals, they protect internal structure of flower. Petals, they attract insects and birds towards the flower. Stamen, it is male reproductive part. Carpel, it is female reproductive part. How will you compare self-pollination and cross-pollination? Self-pollination. If pollen grains are transferred from anther of a flower to stigma of the same flower is called self-pollination. अगर pollen grains एक फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. Cross pollination. If pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant is called cross pollination. अगर pollen grains एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन.
Compare gram and maize seed. Gram seed, it has two cotyledons. Endosperm is absent. It has thick seed coat. Maize seed, it has one cotyledon. Endosperm is present. It has thin seed coat. Define reproduction. Reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind. Question number 3. Constructed response questions. Observe the given picture and tell what is the role of water in seed germination. Water play a vital role in seed germination. Germination cannot occur until seed coat absorb water. तो जब तक सीड कोट जो है वो वाटर ऑब्जर्व नहीं करता तब तक जर्मिनेशन नहीं हो सकती. Investigate if all the insects become extinct, what will be its effect on flowering plants. कि अगर इंसेक्ट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मीन्स उनकी पैदावार नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका फ्लावरिंग प्लांट पर क्या इम्पैक्ट होगा. If all insects become extinct, the process of pollination will be stopped and number of plants will also be decreased. तो जब इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम हो जाएंगे. Question number 5. Label the given picture. This is the picture of the structure of a flower and label is, this is the pollen grain, this is petal, this is stigma, style, ovule, pedicel, sepals, ovary, filament, anther. Students, this is your home task. Draw the structure of the flower and label it on your notebook by yourself. Dear students, after studying this chapter, you will be able to describe the structure of flower, pollination and its types, define reproduction and differentiate between sexual and asexual reproduction, describe the structure of seed and demonstrate its germination, compare between the structure and function of gram and maize seed, illustrate the conditions necessary for seed germination. Dear students, read the whole lesson carefully and do the practice of fill in the blanks, true, false, column from reading and learn all the activities.